A complex field. Afnaan Qayyum. Published November 22, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. Various social factors contribute to poor mental health outcomes. These may include childhood experiences, nutrition, education, poverty, income inequality, housing, transport, etc. But it is important to realize that these factors mean different things to different people. Any vulnerable population is more likely to be suffering from mental health disorders. For example, in a gendered context, all these social determinants in Pakistan will be exacerbated by systemic sexism that reinforces health inequities. Mere investment will only have a minimal effect without a full understanding of how existing policies perpetuate the system. This is where the role of policymakers is critical. Like many other health challenges, mental health is a complex field. But little attention has been paid to it, and it lags far behind other areas of physical healthcare. Many LMICs lack the resources to provide access to their communities. Barring areas where the elite reside, neighborhoods comprising underserved people are likely to be far from hospitals, clinics, and doctors, a problem made worse by the lack of public transport to get to medical providers in high-income areas. Stigma and lack of social awareness further aggravate the problem. Meanwhile, mental health also faces an acute workforce shortage in LMICs. With an estimated 1% of the health budget devoted to mental health, the psychiatrist-to-population ratio in Pakistan is dangerously low at 1 to 0.5 million-1 people, against a recommended 1 to 10,000. The ratio of psychologists is similarly critical. There are only a handful of mental health hospitals across the country, with rural communities almost completely cut off. At the same time, the workforce we do have is not representative of the population it serves. The result is disparities in the quality of care, constrained access to linguistic and culturally appropriate services, lower patient satisfaction, workforce burnout and overrepresentation in coercive treatment environments for people with serious mental illnesses. We must address disparities if we aim to advance social justice. This is the part of the story which we have heard countless times. In fact, addressing disparities is equally important to the entire society because it is crucial to overall national economic prosperity. Lack of resources result in stress, loss of productivity, and job absenteeism, costing us trillions of rupees annually. Little attention has been paid to mental health. Not only this, ignoring mental health treatment has a big opportunity cost. When mental health professionals are unavailable, it produces serious spillover costs by loss in economic productivity and by shifting the burden to more expensive, and often unprepared, environments such as prisons, public hospital emergency rooms, and homeless shelters. Mental well-being is critical to all, even those who may not be suffering from an illness will be impacted indirectly. Studies repeatedly indicate that integrating mental health into primary care, as well as treating mental disorders and other non-communicable diseases in a collaborative model, is effective. Focus on treatment alone will also not be sufficient to close the mental health gap. Promotion and prevention must be boosted. For instance, research points to the early onset of mental health problems, with around 14% of children estimated to be suffering globally from mental disorders and illnesses. This is clearly an area of focus, otherwise, the issue will aggravate and go undetected, and untreated mental disorders occurring early in life will lead to lifelong disability and preventable early deaths. The same applies to programs aimed at mitigating childhood trauma and reducing physical punishment, or those aimed at modifying cultural norms to accomplish gender, sexual and racial equality.
or to programs for forced migrants, whether refugees or IDPs, which is a population where trauma and inequality are the norm. My point, and I hope the most prominent takeaway, is understanding the interconnectedness of health inequities. And it is not merely a resource problem. For example, even before the pandemic, Texas, which had a surplus leftover budget of $24 billion in 2021, had the highest rate of uninsured population at 18%, double that of the national U.S. average. 3 out of 4 of those were people of color. I am not arguing that all aspects of mental health are non-biological. I'm encouraging more serious questions about why our system reinforces itself. As a New York Times article noted, if someone is driving through a crowd, running people over, the smart move is not to declare an epidemic of people suffering from got run over by a car syndrome. While you must treat the very real suffering happening, the key point is, you're going to have to stop the guy running over people with the car. The writer is pursuing an MA degree in Global Policy Studies at the University of Texas at Austin. Published in Dawn, November 22, 2022. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. मुख्तलिफ समाजी अवामिल खराब ज़हनी सेहत के नताइज में हिस्सा लेते हैं। इनमें बचपन के तजुर्बात, ग़िज़ाइयत, तालीम, गुर्बत, आमदनी की अदम मुसावात, रहाइश, नक़्ल व हमल वगैरह शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि इन अवामिल का मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किसी भी कमज़ोर आबादी को ज़हनी सेहत के अवारिज़ में मुब्तला होने का ज़्यादा इम्कान है। मिसाल के तौर पर, सिंफी तनाजुर में, पाकिस्तान में इन तमाम समाजी अवामिल को निज़ामी जिनसियत की तरफ से बढ़ाया जाएगा जो सेहत की अदम मुसावात को मजबूत बनाता है। मौजूदा पॉलिसियों के निज़ाम को बरकरार रखने के बारे में मुकम्मल तफ़हीम के बगैर सिर्फ सरमायाकारी का कम से कम असर पड़ेगा। ये वो जगह है जहां पॉलिसी साजों का किरदार अहम है। बहुत से दीगर सेहत के चैलेंजों की तरह, ज़हनी सेहत एक पेचीदा मैदान है। लेकिन इस पर बहुत कम तवज्जो दी गई है और ये जिस्मानी सेहत की देखभाल के दूसरे शुबों से बहुत पीछे है। बहुत से LMIC में अपनी बरादरियों तक रसाई फराहम करने के लिए वसाइल की कमी है। इन इलाकों को छोड़कर जहां अशराफिया रहती है, पसमानदा लोगों पर मुश्तमिल महल्ले हस्पतालों, क्लिनिक्स और डॉक्टरों से दूर होने का इम्कान रखते हैं। एक मसला आला आमदी वाले इलाकों में तिब्बी फराहम कुनिंदगान तक पहुंचने के लिए अवामी नक़्ल व हमल की कमी की वजह से बदतर हो गया है। बदनामी और समाजी बेदारी की कमी इस मसले को मजीद बढ़ा देती है। दरी असना, ज़हनी सेहत को भी LMIC में अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी का सामना है। सेहत के बजट का एक अंदाजे के मुताबिक 1% ज़हनी सेहत के लिए मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान में नफ्सियाती माहिरीन और आबादी का तनासुब ख़तरनाक हद तक कम है, जो 1 से 5 लाख से 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि तजवीज़ करदा 1.000 अफराद। माहिरीन नफ्सियात का तनासुब भी इसी तरह अहम है। मुल्क भर में सिर्फ मुट्ठी भर दिमागी सेहत के अस्पताल हैं, जिनमें देही बरादरियां तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट गई हैं। एक ही वक्त में, हमारे पास जो अफरादी क़ुव्वत है, वो इस आबादी की नुमाइंदगी नहीं करती है जो उसकी खिदमत करती है। इसका नतीजा देखभाल के मेयार में तफावत, लिसानी और सकाफती तौर पर मुनासिब खिदमात तक महदूद रसाई, मरीजों की कम इत्मीनान, अफरादी क़ुव्वत का बर्न आउट और संगीन ज़हनी बीमारियों वाले लोगों के लिए ज़बरदस्ती के इलाज के माहौल में ज़्यादा नुमाइंदगी है। अगर हम समाजी इंसाफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें तफावत को दूर करना होगा। ये कहानी का वो हिस्सा है जो हमने बेशुमार बार सुना है। दर हकीकत, तफावत को दूर करना पूरे मुआशरे के लिए यकसां तौर पर अहम है, क्योंकि ये मजमूई तौर पर कौमी इक्तिसादी खुशहाली के लिए अहम है। वसाइल की कमी के नतीजे में तनाव, पैदावारी सलाहियत में कमी और मुलाजमत ओहे की गैर हाजिरी पैदा होती है, जिससे हमें सालाना खरबों रुपए का नुकसान होता है। ज़हनी सेहत पर बहुत कम तवज्जो दी गई है। सिर्फ यही नहीं, ज़हनी सेहत के इलाज को नज़रअंदाज करने से एक बड़ा मौका लागत आती है।
जब ज़हनी सेहत के पेशावर अफराद दस्तयाब नहीं होते हैं तो ये माशी पैदावारी में नुकसान और बोझ को ज़्यादा महंगे और अक्सर गैर तैयार शुदा माहौल जैसे जेलों, सरकारी अस्पताल के हंगामी कमरों और बेघर पनागाहों में मुंतकिल करके संगीन अस्पलूर अखराजात पैदा करता है। ज़हनी तंदुरुस्ती सबके लिए अहम है, यहाँ तक कि वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते हैं वो बिलवास्ता तौर पर मुतासिर होंगे। मुतालियात बार बार इशारा करते हैं कि ज़हनी सेहत को बुनियादी निगहदाश्त में ज़म करने के साथ साथ बाहमी ताउन के मॉडल में ज़हनी अवारिस और दीगर गैर मुताद्दी बीमारियों का इलाज करना मुअस्सर है। ज़हनी सेहत के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए सिर्फ इलाज पर तवज्जो देना भी काफ़ी नहीं होगा। फ़रोग़ और रोकथाम को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर तहक़ीक़ ज़हनी सेहत के मसाइल के इब्तिदाई आगाज़ की तरफ इशारा करती है, जिसमें तकरीबन 14% बच्चों को आलमी सतह पर ज़हनी अवारिस और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये वाज़े तौर पर तवज्जो का एक इलाका है। दूसरी सूरत में यह मसला बढ़ जाएगा और उसका पता नहीं चलेगा और ज़िंदगी में इब्तिदाई तौर पर होने वाले गैर इलाज शुदा ज़हनी अवारिस ज़िंदगी भर की माजूरी और रोकथाम के काबिल इब्तिदाई मौत का बाइस बनेंगे। यही बात उन प्रोग्रामों पर भी लागू होती है जिनका मकसद बचपन के सदमे को कम करना और जिस्मानी सज़ा को कम करना है, जिनका मकसद सिनफी, जिनसी और नस्ली मसावात को पूरा करने के लिए सकाफती उसूलों में तरमीम करना है। जबरी तारकीन वतन के लिए प्रोग्रामों के लिए, चाहे वो पनागुज़ीन हों या IDPs, जो एक ऐसी आबादी है जहां सदमे और अदम मसावात मामूल है। मेरा नुक्ता नज़र और मुझे उम्मीद है कि सबसे नुमायां टेक अवे सेहत की अदम मसावात के बाहमी ताल्लुक को समझना है, और ये सिर्फ एक वसाइल का मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर वबाई मर्ज से पहले ही टेक्सास, जिसके पास 2021 में $24 बिलियन का सरप्लस बचा हुआ बजट था, में गैर बीमा शुदा आबादी की सबसे ज्यादा शरह 18% थी, जो कौमी अमरीकी औसत से दुगना है। इनमें से 4 में से 3 रंग के लोग थे। मैं ये बहस नहीं कर रहा हूं कि ज़हनी सेहत के तमाम पहलू गैर हयातियाती हैं। मैं इस बारे में मजीद संजीदा सवालात की हौसला अफजाई कर रहा हूं कि हमारा निज़ाम खुद को क्यों मजबूत बनाता है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के एक मजमून में कहा गया है, अगर कोई हुजूम के जरिए गाड़ी चला रहा है, लोगों को चला रहा है, तो होशियार अक़दाम ये नहीं है कि कार सिंड्रोम के जरिए गोट रन ओवर में मुब्तला अफराद की वबा का ऐलान किया जाए, जबकि आपको बहुत हकीकी मसाइब का इलाज करना ज़रूरी है। कलीदी नुक्ता यह है, आपको कार के साथ लोगों पर चलने वाले लड़के को रोकने के लिए जा रहे हैं। मुसन्निफ ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ग्लोबल पॉलिसी स्टडीज में MA की डिग्री हासिल कर रहे हैं। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.